Hello, my dear amazing learners. Welcome to today's session. This is Achal, your learning buddy, and we are going to be taking up SST for class 6. And this is history chapter number 7, which is the first empire, that is the Mauryans, right? पहली empire कौन सी थी जो existence में आई? That is the Mauryan Empire. So we are going to be learning about Mauryans today. So in this chapter, we learn about Alexander's invasion and how he defeated King Porus. Effects of Alexander के invasion के क्या effects थे? The foundation of the Mauryan Empire, the greatness of Chandragupta Maurya, King Bindusara जिनका reign था from 298 BC to 273 BC. Then Ashoka's reign, that was from 273 to 232 BC. The Mauryan art and architecture we'll be talking about, the Mauryan administration, the social conditions at that time, and how this Mauryan Empire came to an end, right? So all that we are going to be covering in this chapter. So this is the timeline where Alexander invaded India in 326 BC, right? And in 321 BC, the Mauryan Empire was formed. Then बिंदुसारा's reign, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसारा, उसका reign start होता है from 297 BC. Then Ashoka's reign began in 273 BC. Ashoka was the son of Bindusara. Then in 261, the Kalinga War was fought. Right. After that, in 185 BC, the Mauryan Empire came to an end. So all this we are going to be studying, all these dates, all these events we'll be studying about in this chapter. So let's first begin with Alexander's invasion and defeat of King Porus, right? So Alexander, he was the king of Macedonia. Alexander, the king of Macedonia, after his victory over Iran, turned towards India. So ईरान के जीत हासिल करने के बाद तो इंडिया की तरफ उन्होंने अपना रुख किया. In 326 BCE, he attacked the northwest part of the country. कंट्री का जो northwest part था वहाँ अलेक्जेंडर ने अटैक किया, इन्वेड किया. Porus made preparations to resist the invader. Alexander gathered his forces on the left bank of Jhelum. So जो King Porus था वो झेलम से लेकर चेनाब रिवर तक, राइट, उनका जो रीजन था वो वहां पर रूल किया करते थे. सो पोरस ने अलेक्जेंडर के अटैक को रेजिस्ट करने के लिए प्रिपरेशंस करी थी. अलेक्जेंडर ने अपनी जो फोर्सेस थी, ही गैदर्ड देम ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द झेलम. ही क्रॉस्ड द झेलम एंड मेड अ सरप्राइज अटैक ऑन पोरस. उन्होंने पोरस पर एक सरप्राइज अटैक किया. किंग पोरस fought bravely, he fought very bravely, but he was seriously wounded and he was taken prisoner. उन्हें कैदी बना लिया गया था. When produced before Alexander, Porus said he should be treated like a king who fought for his motherland. So Porus ने Alexander से बोला कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि वो एक ऐसे देश का एक किंग है, उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाए. He was fighting for his country, so he should not be treated badly. Alexander, he admired Porus' courage. Alexander को Porus की जो हिम्मत थी या जो उसका courage था उसको बहुत पसंद आया. Alexander gave Porus back his kingdom and made him a friend and ally. Right? उसे अपना दोस्त बना लिया, अपना supporter बना लिया, उसका kingdom उसे वापस कर दिया Alexander. Right? Now Alexander's return journey. Alexander planned to march forward. He crossed the Chenab and the Ravi rivers and advanced up to the Bias, right? So Alexander, आगे बढ़ता गया. He planned to march forward. वो Chenab Ravi, he crossed the Chenab river को भी उन्होंने cross किया, and the Ravi rivers, and he advanced up to the Bias river. उसके बाद क्या हुआ? But the areas conquered by him rose in revolt. लेकिन इतने में उसने जो areas कॉन्कर किया था वो सब रेबेलियस हो गए, राइट? वो सब उससे वॉर में एंगेज हो गए. His soldiers also refused to go any further because the territory
beyond the Bias river, it belonged to the mighty Nanda rulers. जो नंदा emperors थे उनको belong करती थी. So जो अलेक्जेंडर के जो troops थे, right, soldiers थे, उन्होंने भी ब्यास से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया. So he had to return back. With a heavy heart, he began his return journey. बहुत ही heavy heart से उन्होंने वापस की अपनी start की. That was in 325 BC. 325 BC में वो वापस जाने लगे. And a year later, he died at Babylon. Babylon में यानी in modern Iraq उनकी death हो गई. So the story says that the first Mauryan king Chandragupta hailed from a land of peacocks. उन्हें माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त थे, जो फर्स्ट मौर्यन किंग थे, he came from a land of peacocks, hence his empire was called Mauryan Empire. मोर के ऊपर उस empire का नाम रखा गया था Mauryan Empire. Right? Now let's talk about the effects. जो अलेक्जेंडर ने जो invasion किया था, उसका effect क्या हुआ? Alexander had appointed a few governors to look after the territories he had won. So जो territories वो जीता जा रहा था, उसने उन सब की administration के लिए governors रखे हुए थे. His empire broke up soon, but its indirect results were many. उसकी empire हालांकि बहुत जल्दी break down हो गई, but उसके जो effects थे वो काफी strong थे. It was India's first contact with the West, right? European countries से पहला contact था इंडिया का. The sea and the land routes taken by Alexander encouraged the traders. So जिस route से, जिस land और sea route से Alexander ने इंडिया में एंट्री की थी, so वो जो routes थे, वो tradesmen ने उससे उसका जो trade था वो flourish किया. This boosted trade between India and the West, that is the Europe. Many Greeks had settled in the northwest region. जो इंडिया का जो northwest region था, वहाँ पे बहुत सारे Greek people आके settle हो गए. Indian art and culture began to be influenced by the Greeks. So इंडिया का जो art और culture था वो Greek से influence होने लगा. And the Greek technique जो थी, it left its mark on the Gandhara School of Art. जो Gandhara School of Art है, वहाँ आज भी Greek का जो इन्फ्लुएंस है वो देखा जा सकता है. उनकी जो टेक्निक्स थी वो अभी भी वहां पर देखी जा सकती है. Now the invasion made the kingdoms of the northwest weak. इस invasion की वजह से जो northwest में invade किया था अलेक्जेंडर ने, so जो northwest की जो areas थे वो इससे काफी weak पड़ गए. This paved the way for the rise and growth of the Mauryan Empire in India. इसकी वजह से जो Mauryan Empire थी वो अपना यहाँ पर कॉन्कर कर सकी इसको और यहाँ पे अपनी एम्पायर बना सकी. पेव द वे फॉर द राइज एंड ग्रोथ. वहाँ पर मौर्यन एम्पायर डेवलप हुई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. सो विष्णुगुप्ता, बेटर नोन एज चाणक्य और कौटिल्य, राइट, वाज अ लर्नेड ब्राह्मण ऑफ तक्षशिला. चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ये सब एक पर्सन के नाम हैं जो कि एक ब्राह्मण थे. एंड ही वाज अ वेरी लर्नेड ब्राह्मण एंड ही वाज फ्रॉम तक्षशिला. ही हैड गॉन टू पाटलिपुत्र वेयर ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदा किंग. सो वो पाटलिपुत्र गए थे जहां पर जो नंदा रूलर्स थे, नंदा किंग थे, धनानंदा, उन्होंने उनकी बहुत इंसल्ट की थी. ऑन हिज वे बैक टू तक्षशिला ही मेट यंग चंद्रगुप्त मौर्य. सीइंग द साइन ऑफ greatness in the boy, he took Chandragupta Maurya to his native town and he gave Chandragupta Maurya a perfect education, right? So जब वो वहाँ से जब पाटलिपुत्र से वो वापस आ रहे थे तो उनको कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य मिला. और उन्होंने, चाणक्य ने उस बॉय के अंदर एक महानता देखी, राइट. उन्हें पता था कि आगे जाकर बहुत महान व्यक्ति बनेगा. सो उन्होंने क्या किया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य टू हिज नेटिव टाउन, उसको अपने साथ वापस ले आए अपने टाउन में. ही गेव हिम परफेक्ट एजुकेशन. उन्होंने उनको खूब अच्छी एजुकेशन दी जिससे कि वो आगे जाके खूब महान व्यक्ति बने. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड मगध. वो चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य सेट आउट टू रिक्रूट सोल्जर्स फॉर द आर्मी. चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर अपनी आर्मी के लिए सोल्जर्स को रिक्रूट किया, एम्प्लॉय किया. Chandragupta Maurya installed himself as a king. वो king बने and he first defeated the Greeks who were the rulers of northwest region of India. जो northwest में जो Greeks आके settle हुए थे, उन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको डिफीट किया सबसे पहले. So he made himself the master of the whole of Punjab and Sindh. So बहुत जल्दी ही चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध के मास्टर बन गए थे. Then he turned towards पाटलिपुत्र. अब वो उन्होंने जहाँ नंदा डायनेस्टी थी, नंदा रूलर्स थे, उनकी तरफ उन्होंने अपना रुख किया. The Nandas were completely defeated. उनको completely defeat कर दिया. He became the first ruler of Maurya dynasty in 324 BC. Right? So उन्होंने नंदा रूलर्स को डिफीट कर दिया. So this was only possible because of the help of चाणक्य, कौटिल्य, right? जिनको उन्होंने इंसल्ट किया था. So he prepared with the help of Chandragupta Maurya. He defeated the Nandas. So Chanakya and Chandragupta Maurya, they defeated the Nandas. Now the various concepts of Chanakya are compiled in a book known as अर्थशास्त्र. चाणक्य की एक written book है अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है. It gives details of governance, economic affairs and warfare, right? जो economic वहाँ पे जो conditions थी, affairs थे, जो governance थी, कैसे administration किया जाता था, जो warfare था, battles, उनका पूरा account, उनके बारे में सब कुछ जानकारी हमें अर्थशास्त्र में मिल जाती है. This book is renowned across the world and many of its teachings are relevant even in this age. So उस book की teachings जो है वो आज के time में भी काफी relevant है. Now let's talk about war with Seleucus. The territories west of the Indus were ruled by the Greek king Seleucus, right? So जो Indus river के जो west वाले territories थी वहाँ पर king Seleucus का rule था. Chandragupta Maurya crossed the Indus in 305 BC. उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 BC में इंडस रिवर को क्रॉस करके the Mauryan armies rushed to the northwest. वो northwest में एंटर हुई. It was a crushing defeat for Seleucus और Seleucus को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था उन्होंने. Seleucus was forced to give many territories, Herat, Kabul, Kandahar. So ये सब territories उनसे forcefully ले ली गई. These territories are the parts of modern Afghanistan now. आज का जो अफगानिस्तान है ये territories वहाँ belong करती हैं. So चंद्रगुप्त मौर्य he married the daughter of King Seleucus, जिसका नाम था Helen. The Greek king sent Megasthenes as his ambassador to the Mauryan court. उन्होंने अपना जो Greek king थे उन्होंने Megasthenes को Mauryan court में भेजा as their representative, as their ambassador. And Megasthenes lived at Patliputra for a long time and wrote a book called Indica, right? It is also a very good source of history और उस टाइम के बारे में information जानने की बहुत अच्छी book है. It is an account of foreign travelers जिनको हम बोलते हैं. So Megasthenes ने Indica नाम की एक book लिखी. काफी टाइम तक Mauryan court में as an ambassador, Greek king के ambassador के रूप में वहाँ रहे. So Megasthenes was the ambassador of Seleucus Nicator. He lived in the court of Chandragupta for many years. वहाँ पर उनके कोर्ट में वो बहुत साल तक रहे और उन्होंने सब कुछ वहाँ जो उन्होंने ऑब्जर्व किया. He wrote the account of everything in his book named Indica. This is Seleucus. Now let's talk about the greatness of Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya has been described as the first historical emperor of India, right? So किंग्स होते हैं, एम्परर होते हैं, राइट? किंग्स होते हैं जो अपने किंगडम के राजा होते हैं, बट एम्परर होते हैं बहुत सारे किंगडम्स के ऊपर बादशाह. So he was the first historical emperor of India. He ruled for about 25 years. His empire included Bihar, Bengal and Assam in the north, Mysore in the south, and Herat, Kabul and Kandahar in the west. This was the extent of his empire. From Megasthenes' book Indica, we gain a lot of knowledge about the Mauryan administration. So Mauryan empire की जो administration थी उसके बारे में बहुत सारी information, knowledge मिलती है हमें by Megasthenes' book, that is Indica. Another main source of information for this period is अर्थशास्त्र, that is written by Chanakya. कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी, that is also a very good source of information about that period. So now kingship, right? कौटिल्य ने क्या किया? कौटिल्य जो अर्थशास्त्र, right, उनके कुछ key points हैं. कौटिल्य divided the king's day into 8 parts. जो king का day था उसको 8 parts में कौटिल्य ने divide किया था. It was the king's duty to give close attention to people's welfare. और उन्होंने ये सिखाया था
कि किंग की जो मेन ड्यूटी है वो लोगों का ध्यान रखना है, लोगों की भलाई है, लोगों का वेलफेयर है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जितने भी लीगल सिस्टम है, लीगैलिटीज हैं, जुडिशरी जो है, जो डिसीजंस हैं, वो सब किंग को ही देखना था। एंड मिलिट्री एक्शन, राइट, जो मिलिट्री है, आर्मी से रिलेटेड जितने एक्शंस हैं वो सब किंग की ड्यूटी के अंदर आते थे, राइट। नाउ टैक्सेस, कौटिल्य सेड द टैक्सेस मस्ट बी रीजनेबल। कौटिल्य ने जो टैक्सेस थे वो क्वाइट रीजनेबल रखवाए थे। द लैंड टैक्स वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। द किंग कलेक्टेड टैक्सेस ऑन वेरियस ट्रेड्स वेरी एफिशिएंटली थ्रू हिज ऑफिशियल्स। बहुत एफिशिएंट था उनका टैक्स सिस्टम, जिसमें वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस लेते थे एंड टैक्सेस बहुत इजीली वो अपने ऑफिशियल से कलेक्ट करवा लिया करते थे। Now let's talk about their military organization. There was a large standing army. उनकी जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. It consisted of 6 lakh infantry. Infantry क्या होती है? वो soldiers, those soldiers they fight on foot. मतलब जो जमीन पर लड़ाई करते हैं. Then there were 30,000 cavalry. Cavalry means soldiers who fight on horseback. And then there were 9,000 war elephants. 9,000 elephants थे जो वॉर में यूज किए जाते थे. The king had 2,000 war chariots and also a small navy. उनके पास 2,000 chariots थे जो वॉर में यूज किए जाते थे. And he also had a small navy. So उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही बड़ी थी. Administration of the capital. Megasthenes remarked that the city had an efficient local government. Right? Megasthenes ने ये बताया है कि सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करती थी. The city was administrated by a municipal body, by a local body. Megasthenes' description leaves no doubt that peace and prosperity prevailed throughout the kingdom. So Megasthenes के अकाउंट को पढ़कर ये साफ पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में उस टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर पीस एंड प्रोस्पेरिटी प्रिवेल किया करती थी, राइट. सो ये जो लोकल बॉडीज थी, म्यूनिसिपल बॉडीज थी, वो लोगों की सर्विस, पब्लिक सर्विसेज का ध्यान देते थे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल लोगों का जितनी भी उनकी जरूरतें होती थी उन सब पर ध्यान दिया जाता, राइट. दिस इज मौर्यन एम्पायर. दिस एंटायर येलो पार्ट दैट यू सी is the extent of Mauryan Empire, right? So Iraq, Kabul, Iran, all these parts, almost more than half of India came under the Mauryan Empire. Only a small part of southern region was left. Now let's talk about King Bindusara, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे. Let's talk about his reign. Chandragupta Maurya had embraced the Jain religion. चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन religion को accept कर लिया था. He gave his throne to his son Bindusara and he himself, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, he settled at Shravnabelagola, a place in कर्नाटका. वो खुद वहां जाकर सेटल हो गए. अपनी जो थ्रोन थी, गद्दी थी, उन्होंने अपने बेटे बिंदुसारा को दे दी थी. लाइक अ जैन मुनि, जैसे कि जैन मुनीस होते हैं. He fasted unto death. उन्होंने फास्ट किया डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो. The hills where he lived and died is still known as चंद्रगिरी. तो जिन हिल्स पर वो रहे थे और जहां उनकी डेथ हुई थी वो आज भी चंद्रगिरी के नाम से जाने जाते हैं. King Bindusara also ruled for about 25 years. King Bindusara ने भी 25 साल तक जो रूल किया. Very little is known about his reign. उनके शासन के बारे में उनके काफी कम इंफॉर्मेशन है. But he maintained law and order in his vast empire. लेकिन जो उनकी एम्पायर थी उसमें ऐसा देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है. इस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अशोका एंड हिज reign. Ashoka, he was the son of Bindusara, right? He ruled from 273 BC to 232 BC. For about 12 years, he did not try to expand his kingdom. 12 साल तक अशोका ने अपना किंगडम एक्सपैंड करने की कोशिश ही नहीं की. Then in 261 BC, he decided to extend the empire by conquering Kalinga, right? तो उन्होंने सोचा कि मैं कलिंगा को conquer करके, see here, this part, Kalinga, it was not part of the Mauryan Empire earlier. So after 12 years, Ashoka decided to conquer Kalinga, right? So Kalinga का war हुआ.
The kingdom of Kalinga had a powerful army. उनकी army बहुत strong थी. Although Kalingans were crushed, Ashoka could never forget the horrors of the battle. कि उस time पर, although कलिंगा वॉर में अशोका की जीत हुई, लेकिन उस वॉर के जो डिस्ट्रक्शन थी, लोगों की सफरिंग्स देखकर किंग अशोका वाज डीपली मूव्ड एंड thousands of people on both the sides had been killed. This battle brought a complete change in Ashoka's life. He was completely moved by the horrors of the battle, that is the destruction that was caused, so many people that had died. He was completely changed, his life was changed. The war drum was silenced forever. मतलब कि जो ये बैटल था, उन्होंने उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था. that he vowed that he will never fight another battle in his life. From that time onwards he preached nothing but peace. उसके बाद से वो सिर्फ और सिर्फ शांति का ही संदेश पहुंचाते थे. He became a follower of Buddha. वो बुद्धा के follower थे. He spent the rest of his life in the service of his people and he became Devanam Priya. That is, Devanam Priya means the beloved of gods, right? उन्होंने war एकदम छोड़ दिया था. वो सिर्फ लोगों के लिए काम किया करते थे, उनकी peace के लिए चिंता किया करते थे. Now let's talk about Ashoka's Dhamma, right? So Prakrit word Dhamma. Dhamma is a Prakrit word and the Sanskrit word Dharm have the same meaning. उनका same meaning है Dhamma, Dharm. Dhamma never meant exactly religion. Dhamma का मतलब सिर्फ religion नहीं है. इसका मतलब होता है duty. It was used for duty. कि आपकी duties क्या हैं. It contained the best of all religious faiths. जितने भी religions हैं, उन सब का जो best है, that was taken in his Dhamma. This is Ashoka's empire. So he had conquered some more states. Kalinga was now included in his empire, right? But after that, he never fought any war. Ashoka asked his people to practice ahimsa. So Ashoka also अपने लोगों को उन्होंने non-violence की तरफ preach किया कि non-violence का आप support करें. No animal could be slaughtered for a sacrifice. उन्होंने भी sacrifice को he was also strictly against the animal sacrifice. Father and mother must be obeyed. उन्होंने ये जो धम्मा था उनका ये उसके कुछ points हैं. Father and mother उन्होंने ये सिखाया कि माता पिता की हमेशा उनकी बात माननी चाहिए. They must be obeyed and pupils should honor their teachers. और students को अपने teachers की respect करनी चाहिए. Masters should treat their slaves and servants with kindness. उन्होंने ये preach किया कि जो masters हैं उन्हें अपने जो slaves हैं, उनके जो servants हैं, उनको भी kindness से, दया से उनके साथ पेश आना चाहिए. People should show tolerance for religious beliefs of others. They should remember that all religions have the same goals. उन्होंने ये preach किया, लोगों को ये सिखाया कि दूसरे religion के लोगों को भी उतनी ही respect मिलनी चाहिए, right? They should be tolerant towards other people's religious beliefs, क्योंकि ultimate goal जितने भी religions हैं सबका same है, right? That is enlightenment, nirvana. People used to perform many ceremonies on the occasion of childbirth or weddings. लोग बच्चों के पैदा होने पर या weddings पर बहुत elaborate functions किया करते थे, ceremonies किया करते थे. So all these ceremonies were worthless, जो कि useless थी. They should spread dhamma in all the directions. So अशोका ने ये spread किया कि उनको इन useless ceremonies में अपना time and पैसा waste नहीं करना चाहिए. Instead they should spread the dhamma, the Ashoka dhamma. This is the best ceremony and the best gift. That was the best ceremony that one could perform, and that was the best gift. Spreading the dhamma was the best gift that one could give anyone. Right? Now, what were the means that were adopted to spread his dhamma? Ashoka practiced what he preached. Most importantly, right? जो वो लोगों को जो सीख दिया करते थे, वो खुद भी follow किया करते थे. He visited the holy places like Lumbini, बोध गया and सारनाथ, right? So इन सब जगहों पर जहाँ पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, बोध गया उस ट्री के पास जहाँ पर उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, एंड सारनाथ, इन सब जगहों पर अशोका गए. ड्यूरिंग दीज टूर्स he gave gifts to Brahmins and Buddhist monks alike. उन्होंने एक से gifts Brahmins को और जो monks थे, Buddhist monks, सबको same चीजें दी. Principles of Dhamma were engraved on rocks and pillars, right?
रॉक्स और पिलर्स पर जो अशोका का धम्मा था, उसके प्रिंसिपल्स थे, उनको एनग्रेव कराया गया. अशोका ऑर्डर्ड ऑफिशियल्स टू टीच पीपल अबाउट धम्मा. ऑफिशियल्स को भी ये बोला गया कि लोगों को धम्मा के बारे में बताया जाए. His officers constructed wells and planted trees for the comfort of travelers. जो लोग ट्रैवल करते थे उनका भी ध्यान रखा उन्होंने, उनके कंफर्ट के लिए उन्होंने ट्रीज प्लांट किए, राइट, और वेल्स बनाए गए जिससे कि उनको रास्ते में पानी की सुविधा हो सके. Dispensaries were opened for men and animals. Dispensaries means where medicines were available for both men and for both people and animals. A special class of officers were appointed to spread the message of Buddha. Buddha का message spread करने के लिए एक special class of officers was appointed, and these officers were called Dhamma Mahamatras. Right? They were known as Dhamma Mahamatras. Missionaries were sent to Burma, that is Myanmar, Sri Lanka, Syria, Egypt and Macedonia. Missionaries क्या होते हैं? लोग या फिर ग्रुप्स कह सकते हैं आप, जो जाकर उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करती हैं. The Sri Lankan mission was headed by Prince Mahendra. So Sri Lanka में जो लोग भेजे गए, that missionary was headed by Prince Mahendra. It was due to Ashoka's efforts that Buddhism spread far beyond India. So Ashoka के ही efforts, उनकी हिम्मत की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से ही बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से बाहर दूसरे देशों में भी पहुंचाया जा सका. Now Ashoka's edicts, that is his orders or instructions that he had for his people. Ashoka issued many orders which were engraved on rocks, pillars and cave walls. उनके जो orders थे वो rocks पर, pillars पर, cave walls पर हर जगह पाए जाते थे. They were all written in various forms of Prakrit language में ये सब जो उनके orders थे वो लिखे थे. The script used for the edicts is Brahmi script use की गई, from which the Devanagari script has evolved. जो हमारी Devanagari script है वो उसी से ही, Brahmi से ही evolve हुई है. Now what is the importance of those edicts? The edicts have great significance for us. They tell us about Ashoka's past life and his thoughts on the religion and policies of his government. Right? उन edicts को पढ़कर हमें अशोका की लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसकी थॉट्स के बारे में पता चलता है, रिलीजन पर, राइट, कि उनका रिलीजन के बारे में क्या थॉट था, एंड द पॉलिसीज ऑफ हिज गवर्नमेंट, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो क्या पॉलिसीज को फॉलो किया करती थी. These edicts they tell us about the fundamental principles of Dhamma, right, कि उनके क्या बिलीव्स थे, क्या कस्टम्स थे. इन सब एडिक्ट्स को पढ़कर हमें वो सब की भी इंफॉर्मेशन मिलती है. Our whole information about the Kalinga war comes from a rock edict. जो हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है about the Kalinga war, जिसमें किंग अशोका जो थे वो उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई थी, वो हमें मिली है एक रॉक एडिक्ट से, राइट. एक रॉक पर जो एनग्रेव्ड थी एडिक्ट, उनसे हमें पता चला है कलिंगा वॉर के बारे में. The edicts give us an idea about the extent of Ashoka's empire. उनकी empire कहाँ से कहाँ तक थी उसका भी हमें edicts को पढ़कर ही पता चलता है. And they nearly cover the whole of India. So Ashoka ने nearly entire India cover कर लिया था under his rule. The edicts also tell us that Pali or Prakrit was the language of the people, and these were written in Brahmi script. So उसको पढ़कर पता चलता है कि लोगों की उस टाइम पे जो फेवर्ड लैंग्वेज थी वो पाली और प्राकृत थी, एंड जो स्क्रिप्ट थी that used was Brahmi script. Right? Now let's talk about the Mauryan art and architecture. The stone pillars. जो stone pillars थे उनके बारे में बात करते हैं. The stone pillars are the best specimens of the Mauryan art. Mauryan art के जो best examples हैं, evidence हैं, वो हैं जो उस टाइम के stone pillars हैं. These pillars are found in various parts of India like Sanchi, Sarnath, Allahabad, that is now Prayagraj, and Nandangarh. इन सब जगहों पर अशोका के pillars पाए गए हैं. Each pillar consists of 3 parts. जो हर pillar है उसके 3 parts होते हैं. The base, the shaft, and the capital. Right? Base होता है जो ground से जुड़ा हुआ होता है part. Right? Then there is an elongated part जिसके ऊपर capital होता है. So जो shaft है वो connect करती है. It rises from the base to the capital. That is the top part of the pillar. So capital is the top part of the pillar. The most famous of all the pillars is the Sarnath pillar erected in the Deer Park. जो सबसे important, जो most famous
पिलर है वो है पिलर सारनाथ पिलर, राइट, एंड दैट इज द डियर पार्क. हियर एट सारनाथ बुद्धा preached his first sermon. उन्होंने अपनी जो पहली टीचिंग्स, अपनी पहली प्रीचिंग्स की, वो यहीं से स्टार्ट की थी. The lion capital of the Sarnath pillar is carved out of a single block of stone. This is the national emblem that has been taken from the lion capital, the Sarnath pillar. Sarnath pillar का जो top part था वो है lion capital, right? The lion capital of the Sarnath pillar, it is carved out of a single block of stone. एक single block of stone से ये पूरा का पूरा carve किया गया है. The wheel shows that the Buddha's message went around the world. ये जो wheel है, right, इसके बेस में यहाँ पर नीचे की तरफ, it shows that जो बुद्धा का जो मैसेज था वो पूरी दुनिया में फैल चुका था. And the polish of Ashoka's pillars was matchless. जो इनके pillars पर जो polish थी वो कोई मैच ही नहीं कर सकता उसको. It was very good. Modern India has given due recognition to the lion capital at Sarnath. जो lion capital Sarnath pillar पर था उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, बहुत रिकग्निशन दी गई है. आज मॉडर्न इंडिया में भी इट हैज बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. सो जो लायन कैपिटल है, राइट, दैट इज द 4 लायंस पॉइंटिंग इन द 4 डायरेक्शंस, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, उसको अपना नेशनल एम्बलम बनाया गया है, राइट. द फिगर ऑफ द 4 लायंस इज यूज्ड ऑन द इंडियन करेंसी. उसको इंडियन करेंसी पे भी हमने यूज किया है, ये जो हमारा लायन कैपिटल है. एंड द व्हील इज शोन ऑन आवर नेशनल फ्लैग. जो अशोका चक्र है उसे हमने अपने फ्लैग में भी यूज किया है. अशोका पिलर विद हॉर्स कैपिटल इज एट नंदनगढ़. देयर इज एन अशोका पिलर जिसके ऊपर जैसे ये लायन कैपिटल है, हॉर्स कैपिटल है, वो नंदनगढ़ में है. एंड द पिलर विद बुल कैपिटल इज एट रामपुरवा इन बिहार, राइट. सो देयर आर मेनी अदर pillars, Ashoka pillars that has been found. Now let's talk about stupas, right? Stupas क्या होते हैं? This is Sanchi Stupa, the famous Sanchi Stupa in Madhya Pradesh. So a stupa is a dome-like structure made of stone or bricks, right? So पत्थर या brick से बना हुआ एक dome-like structure है. The purpose of a stupa was to honor a sacred spot or to preserve the relics of Buddha, right? In stupas का main purpose क्या था कि एक sacred spot होना चाहिए to honor the relics, to preserve the relics of Buddha. Relics means the physical remains or the objects that were related to Buddha. So वो सब इन stupas में रखे गए हैं. The stupas at Bharut and Sanchi are extremely impressive and famous. The Sanchi stupa was originally built by Ashoka. Ashoka ने ही Sanchi stupa को originally built किया गया था. Later, it was enlarged during the Sangha period. Its gateways have beautiful sculptures depicting the story of Buddha. So, Ashoka ने originally Sanchi Stupa को build करवाया था और बाद में Sangha rulers ने उसको और ज़्यादा बड़ा करवाया, उसको enlarge करवाया, right? Now its gateways, जो इसके gateways हैं, they have beautiful sculptures depicting the story of Buddha. So उसके gateways पर sculptures बने हैं जो बुद्धा की stories के बारे में बताते हैं, right? Now let's talk about what kind of administration was there. कैसे administration की जाती थी in the Mauryan period? The central administration, that is the king and his ministers. The king was at the head of the administration and his powers were unlimited, right? So administration का जो head था वो king हुआ करते थे and उनकी जो powers थी they were unlimited, but he acted according to the rules of Dhamma, right? वो लेकिन धर्म के धम्मा था उसको ही फॉलो किया करते थे. Though their powers were unlimited. The king was guided by the advice of his ministers. उनके जो ministers थे उनके advice पर ही king जो थे वो काम किया करते थे. Now let's talk about provincial and local administration. So the empire was divided into a number of provinces, right? पूरी empire को राज्यों में, प्रदेशों में बांटा गया था. And each province was under a governor. और हर province जो था वो एक governor के under आता था जो उसकी administration look out करते थे. Each province was further divided into a number of districts, right? जिन्हें जिला कहा जाता है. So हर province जो था वो districts में divided था, right? So entire empire was divided into different provinces and each province was divided into districts so that जो इसकी administration थी वो effectively हो सके. Now the city administration,
Administration of the major towns like Patliputra or Ujjain was organized on almost similar lines. Kautilya said the city was placed under the charge of a Nagraka, that is the city magistrate, right? City magistrate कौन थे? जो लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान रखते थे, पब्लिक सर्विसेज का, राइट? सो सिटी मैजिस्ट्रेट जो थे, he was the charge of the city, he was in charge of the city. According to Megasthenes, Patliputra was administered by a municipal commission of 30 members. So Megasthenes की बुक के अकॉर्डिंग जो पाटलिपुत्र है, राइट, इट वाज मिनिस्टर्ड बाय 30 मेंबर्स की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, कमीशन थी, वो सब मिलके उसको एडमिनिस्टर किया करते थे. Now the Mauryan rulers had perfect control over roads and rivers as they were important for trade and commerce. They had realized कि roads और rivers जो है वो trade and commerce के लिए बहुत important है, so उन पर उनका perfect control रहता था. And welfare measures, Ashoka treated his people as his own children. Ashoka जो थे वो अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया करते थे. He worked for their physical and moral welfare. वो उनकी physical, moral welfare, उनकी भलाई के लिए काम किया करते थे. He built hospitals for both men and animals. उन्होंने humans के लिए, animals के लिए, सबके लिए, every living being के उन्होंने hospitals बनवाए. Wells had been dug and rest houses constructed for the benefit of the travelers. So travelers जो थे उनके लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए जहाँ पर वो ट्रैवल करते हुए अगर थक जाए तो रेस्ट कर सकते हैं. एंड देन ही ऑल्सो डग वेल्स फॉर देम जहाँ से वो पानी पी सकते हैं. द एम्परर वाज अ बुद्धिस्ट बट ही अलाउड पीपल टू फॉलो देयर ओन रिलीजियस बिलीव्स. दो अशोका खुद एक बुद्धिस्ट थे, ही फॉलोड बुद्धिज्म, बट उन्होंने कभी भी अपने लोगों को उनका रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं किया. हिज पीपल वर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. He treated the Jains, Buddhists and the followers of other sects alike. So वो हर रिलीजन के लोगों को एक तरीके से ही ट्रीट किया करते. Now what were the social conditions at that time? The caste system prevailed. जो caste system था वो उस टाइम तक भी प्रचलित था. Megasthenes speaks of the caste system. Megasthenes ने अपनी बुक में caste system का जिक्र किया है. The Brahmins and monks held a high position in society. उनकी because they were learned, again they were holding a high position in the society. The society consisted of farmers, artisans, metal workers, weavers, hunters and herdsmen. These were the major occupations. Megasthenes speaks about the high morals of the Indian society. There were no thefts and houses were left unguarded. Megasthenes ने अपनी बुक में जो इंडियंस थे उनके हाई मॉरल्स, उनके हाई प्रिंसिपल्स, गुड प्रिंसिपल्स के बारे में लिखा है. उन्होंने बोला है that there were no thefts. उस टाइम पर कोई चोरियां नहीं होती थी, लोग अपने घरों को अनगार्डेड खुला छोड़कर चले जाते थे. एंड nobody used to steal things. लोग बहुत ही प्रिंसिपल थे. They had good moral values. Ashoka prohibited games which involved violence or cruelty to animals. Ashoka ऐसे कोई गेम्स नहीं होने देते थे जिनमें एनिमल्स के प्रति कोई भी क्रुएल्टी हो. Right? Now the first census. Census क्या होता है? इसमें population की गिनती की जाती है कि कितने लोग हैं. So the first census was done during the reign of Mauryas only, and it listed the people living in the empire. जो सब लोग थे उनके उनकी लिस्ट बनाई गई. Their caste, किस caste को वो belong करते हैं, and also their occupation. So the first census was done in Mauryan period. Now how this Mauryan empire, the first empire that came into existence, came to an end. Ashoka died in 232 BC. Ashoka की 232 BC में death हो गई. Soon after his death, the empire began to decline. और उनकी death के बाद इस empire का, Mauryan empire का downfall start हो गया. There were several reasons why the empire broke up. Let's see. The empire was very vast. पहली बात तो empire बहुत बड़ी थी. It covered almost the entire India. It needed a strong hand to hold it together. But Ashoka's successors were weak. तो एक बहुत ही strong इंसान चाहिए था इतनी vast empire को control करने के लिए, right? But Ashoka के बाद जो उनके successors थे, they were not that strong. They were quite weak. वो empire को नहीं संभाल पाए. The later kings failed to collect taxes from people. वो लोग taxes collect नहीं कर पा रहे थे efficiently लोगों से, जिसकी वजह से they could not maintain a large army. एक large army maintain करने के लिए
बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, राइट? एंड व्हेन दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस एफिशिएंटली, सो दे कुड नॉट एबल टू मेंटेन द आर्मी प्रॉपर्ली. The chiefs of Kalinga and the southern provinces revolted. So Kalinga जो उन्होंने conquer किया था, right? उनके chiefs ने भी revolt कर दिया, rebel कर दिया, right? और जो southern provinces थे, they also revolted against the Mauryan Empire. The Greek kings began to invade the northwest India. Again जो Greeks थे वो northwest India में फिर से invade करने लगे. And the army had lost its fighting qualities because after the Kalinga war, Ashoka did not fight any other वॉर. जो उनकी आर्मी थी, राइट, उन्होंने कलिंगा के बाद कोई वॉर ही नहीं लड़ा था, तो उनके पास जो वॉर फाइटिंग क्वालिटीज थी वो भी बहुत वीक थी, राइट. सो दैट इज वाई जब उन पर किसी ने अटैक किया तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए. इट वॉज अंडर दीज कंडीशंस दैट बृहद्रथ, दैट इज द लास्ट मौर्यन रूलर, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, बृहद्रथ, was killed by the Mauryan general पुष्यमित्र संगा, राइट. उनके मौर्यन एम्पायर के जो जनरल थे पुष्यमित्र संगा, उन्होंने ही बृहद्रथ को किल कर दिया था. he was killed by him and that was the end of the Mauryan empire. Clear? I hope now you have a good understanding about the first empire that came into being, right? The Mauryan empire, all its rulers. This is the glossary, please go through this. We'll have a quick review. The Indica of Megasthenes, Arthashastra of Kautilya, and the rock and pillar inscriptions of Emperor Ashoka are the main sources of information on the Mauryas. These are the main sources जहाँ से हमें ये सारी information about the Mauryan Empire मिली है. Chandragupta Maurya was the first Mauryan emperor. He conquered Magad and then defeated Seleucus Nicator. Bindusara further expanded his empire. Ashoka conquered Kalinga, but after the Kalinga war, he decided to give up war altogether. Ashoka's policy of Dhamma was based on the principles of peace, tolerance, non-violence, coexistence, truth, charity, and respect for all. So these were all the principles on which Ashoka's Dhamma was based on. He issued edicts and अपॉइंटेड ऑफिसर्स टू स्प्रेड धम्मा. उन्होंने ऑर्डर्स इशू किए हुए थे, रूल्स इशू किए हुए थे, एंड ही हैड अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स जो धम्मा को स्प्रेड करते थे. अशोका इज फेमस फॉर हिज पब्लिक वेलफेयर मेजर्स. वो लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया करते थे, उसके लिए वो बहुत फेमस थे. ही बिल्ट रोड्स बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, हॉस्पिटल्स, ही डग वेल्स, ही प्लांटेड ट्रीज फॉर देम, राइट. द मौर्यास हैड अ लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. The empire was divided into provinces, districts, and then villages. A committee of 30 members looked after the administration of Patliputra, right? 30 लोग मिलकर पाटलिपुत्र के administration देखा करते. The Mauryas had a large army and an efficient spy system. उनका जो spy system था, जो जासूस थे, वो system भी उनका काफी strong था. Clear? Now let's come to its exercises. A part, you will darken the circle of the correct option in this OMR sheet, right? Let's see the first one. The Magad kingdom grew into a big empire under the, so किसने बड़ी empire बना दी थी? Empire क्या होती है? Firstly, empire होती है बहुत सारे kingdoms का, उनके ऊपर बहुत सारे kingdoms मिलकर एक empire बनाते हैं. So it was Mauryans. Chandragupta was succeeded by his son. So what was the name of Chandragupta's son? It was Bindusara. Ashoka appointed special officers to spread his Dhamma. क्या कहते थे उन special officers को? Dhamma Mahamantras. Right? Now, Ashoka's royal codes were inscribed on pillars. They were inscribed on pillars. Ashoka denounced war आफ्टर द वॉर ऑफ, कौन से वॉर के बाद उन्होंने वॉर को एकदम त्याग दिया था? आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा. Here, now B part says fill in the blanks. Alexander invaded India. When did he invade India? In 326 BCE. Right? Number 2. Dhamma was written in which language? Prakrit. Number 3. Dash was the capital of the Mauryan kingdom. Mauryan kingdom की capital कौन सी थी? Patliputra. Number 4. Dash was written by Megasthenes. What was the name of the book?
Indica, right? Indica. Dash wrote अर्थशास्त्र. किसने लिखी थी अर्थशास्त्र? Kautilya. Number 6. Dash war brought about a change in Ashoka's life. So it was Kalinga war. And number 7. Dash was the last king of the Mauryan Empire. It was Brihadrat. Clear? Now let's come to true and false. First one. King Porus defeated Alexander's army. क्या King Porus ने Alexander को defeat किया था? No, Alexander defeated King Porus. So this is false. Number 2. Chanakya was a teacher at Takshila. Yes, he was a Brahmin teacher. He used to educate people in Takshila. True. Number 3. Chanakya overthrew King Dhanananda at the age of 30. Yes, along with Chandragupta, he recruited the army and they defeated King Dhanananda. True. Bindusara was the son of Chandragupta. Yes, he was. True. Ashoka adopted Buddhism after the war of Kalinga. Yes, he did. True. And number 6. In the Mauryan Empire, king was the supreme judge. Was the king the supreme judge? Judiciary जो थी वो किसके hands में थी? Yes, in the hands of king. So true. Clear everyone? Now these are detailed question and answers. Please attempt these yourself, children. Now we come to an end of this chapter. I hope you enjoyed this chapter with your learning buddy Achal. I hope to see you in the next chapter. Till then, children, you all have a great time and stay blessed. Bye.